Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the third chapter of 10th Maharashtra State Board New Syllabus Geography. Chapter 3 is Physiography and Drainage. So in this chapter we will study about the physiography and drainage of Brazil and India. So physiography means what are the different landforms that are available in the country. So एक country में कौन कौन से अलग अलग landforms मिलते हैं, जैसे mountains कहाँ है, plateaus कहाँ है, plains कहाँ है, islands कहाँ है, और drainage means rivers or lakes that are found in that country. So we'll see how are the different landforms that are found in India and Brazil, and what are the different river systems that are found in India and Brazil. So let us begin with India's physiography first. So if you see this map of India, here you are seeing different shades. So ये shades resemble करता है height of the area और altitude of the area. ये यहाँ जो greyish region है, ये जो grey region है, यहाँ world के सबसे topmost peaks है. तो यहाँ का जो हाइट है, ग्रेइश रीजन का हाइट है, इट इज़ मोर देन 8000 मीटर्स. ये जो रेडिश पार्ट है इसका हाइट है मोर देन 6000 मीटर्स. एंड हियर वी आर हैविंग येलो रीजन और द प्लेटू रीजन वेयर द हाइट इज 200 मीटर्स. और एंड वी आर हैविंग सम एरिया दैट इज सी लेवल. ये जो नीचे का ग्रीन रीजन है दैट इज नियर सी लेवल. So we are having different types of region in this world, in India. So we are having mountains, we are having plateaus, we are having plains, we are having desert, we are having coastal plains, we are having islands in India. So let us see what are the different physiographic divisions of India and what are the different characteristics of that physical division. See, if you see physiographic division of India, so we are having Himalayan mountains in the north, we are having northern plains here, we are having Great Indian Desert here, we are having plateau region or peninsula region here. Here we are having coastal plain. ये जो येलोइश रीजन है ये पेनिनसुला रीजन है या प्लेटू रीजन है, और ये जो ग्रीनिश रीजन है दैट इज प्लेन और कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. Here we are having eastern Ghats. Here we are having mountains called as Satpura, Vindhyas. Here we are having Himalayan mountain. Here we are having Aravalli mountain. Here we are having Thar desert, or we are also calling it as Marusthali. So these are the various divisions of it. This is the model of a mountain. अगर ये माउंटेन रीजन है, माउंटेन के एक तरफ कुछ रिवर्स फ्लो करते हैं, माउंटेन की दूसरी तरफ कुछ रिवर फ्लो करते हैं. सो माउंटेन इज डिवाइडिंग द वाटर. सो यहाँ जो वाटर आता है और यहाँ वाटर आता है, तो इट इज डिवाइडिंग द water. So this is called as, there are various mountains in India like Aravalli mountain, like Western Ghats, Eastern Ghat, Vindhya mountain, that are acting as a water divide. So Vindhya mountains के इस तरफ कुछ rivers आते हैं, इस तरफ कुछ rivers आते हैं. Western Ghats के इस तरफ कुछ rivers आते हैं, इस तरफ river आते हैं. So that are, these mountains are acting as a water. So in which the first question here that is given is, in which direction does the region with an altitude more than 6000 meter lie? So it is lying in the northern region, northern part of India. Look at the, so in which region is the slope of the region in the north shown in the dark green? So slope of the region, the direction of the slope of the region to the north, यहाँ का जो direction है ये dark green का direction, it is towards the north. यहाँ अगर rivers है तो north की तरफ flow करती है, इस तरफ flow करती है. यहाँ के जो rivers है ये, यहाँ के जो rivers है तो ऐसे flow करते हैं. जैसे अगर दिल्ली से river start हो रही है तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगी. यहाँ के जो rivers है north की तरफ जाते हैं, north की तरफ जाते हैं तो slope इस तरफ है. Next question is, make a list of plateaus located between Aravalli ranges and Chota Nagpur plateau. So here we are having Aravalli ranges and here we are having Chota Nagpur plateau. So Chota Nagpur plateau, Aravalli के बीच में कौन से plateaus है? So here we are having Malwa plateau, Bundelkhand plateau and Baghelkhand plateau. These are the three plateau regions that are between Aravalli ranges and Chota Nagpur plateau. So Chota Nagpur plateau and Aravalli ranges are having three plateaus: Malwa plateau, Bundelkhand plateau and Baghelkhand plateau. And which mountain demarcates the deep plains of Brahmaputra? So mountain demarcates deep plains of Brahmaputra are पूर्वांचल माउंटेन. गारो, खासी, जैंतिया ये हिल्स है, ये डिवाइड करते हैं उस रीजन को, दैट आर कॉल्ड एज पूर्वांचल माउंटेन्स ऑल्सो. So relatively location of Nilgiri hills. So Nilgiri hills are located here. So here we are having Nilgiri hills. And next is, in which direction does the height of the Sahyadri hills increase? So Sahyadri का height साउथ की तरफ इंक्रीज होता है. एज वी गो साउदर्न एंड सदर्न रीजन, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर सह्याद्री से आएंगे तो साउथ की तरफ हाइट ज्यादा है. विंध्या एक्ट एज द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ ब्राजील नाउ. सो ब्राजील के एक तरफ ओशन है, दूसरे तरफ लैंड है, दूसरे कंट्रीज. सो हियर वी आर हैविंग अटलांटिक ओशन
and here we are having Guiana Highland or Guiana Plateau type region. So Guiana Highland. Here we are having Amazon River Basin. Amazon River Basin is a region from which Amazon River is flowing. Here we are having Brazilian Highland. Here we are having Great Escarpment. Here we are having Pampas or Pentalal. So these are the different physiographic divisions. So see, as we have seen in India we are having some regions that has height more than 8,000 meters. 8,000 meters से भी ज़्यादा height है. But if you see the Brazil, if you see the physiographic divisions of Brazil or physiographic conditions of Brazil, their maximum height is 1,000 meters. So 1,000 meters के ऊपर या ऊंचा कोई जगह नहीं है ब्राजील में. So it is having low lying area. There are no taller mountains in Brazil. There are very low lying hills. See, now let us see what is the physiographic divisions of India. There are 5 physiographic divisions of India. First is Himalayas, second is Northern Indian Plains, third is Peninsula or Plateau region, and fourth is Coastal Plain, and fifth is Island Group. Now let us talk with Himalaya first. Himalayas is one of the young fold mountains in the world. The Himalayan extend from Pamir Knot to in Tajikistan to the east. See, if you see the Himalayan mountain, Himalayas are starting from here and ending from Kashmir to अरुणाचल प्रदेश. वी आर हैविंग हिमालयस. सो हिमालयस एक आर्क है, सर्कल के आर्क जैसा है. ये नेपाल और भूटान से भी हिमालय पास होता है. एज दिस इज इंडियाज मैप. सो यहाँ इंडिया का ही हिमालय के बारे में दिया हुआ है. हियर देयर इज कंट्री कॉल्ड एज तजिकिस्तान. फ्रॉम तजिकिस्तान there is a knot, there is a mountain called as Pamir Knot, and here we are having a mountain called as Namcha Barwa. So from Pamir Knot to Namcha Barwa, ये दो हिमालयन माउंटेन को एक क्लिप, एक पिन की जैसा अटैच करके रखते हैं. So it is there, this Pamir Knot and Namcha Barwa are acting as a pin that are fixing Himalayas. So Himalayas is acting like a arc. It is like a arc. Himalayas are from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. So from Arunachal Pradesh to Jammu Kashmir we are having Himalayas. See, if you see the Himalayas is one of the young fold mountains in the world. Last year we have studied about Himalayas. Himalayas is one of the young fold mountains in the world. It extends from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. The Himalayas is not a single mountain range. There are many parallel ranges in system. So Himalayas का एक mountain नहीं है. जैसे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ और अरुणाचल में एंड हुआ, ऐसा एक mountain नहीं है. It is like a range. कुछ mountain range छोटा हाइट है, कुछ mountain range का बड़ा हाइट है, कुछ mountain range का बहुत बड़ा हाइट है. सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है उसका नाम है हिमाद्री और अपर हिमालयस. उसके बीच में जो माउंटेन रेंज है दैट आर कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालयस, और सबसे छोटा है दैट आर शिवालिक. शिवालिक्स आर यंगर ऑफ द ऑल थ्री. सबसे यंगर है शिवालिक. सो देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस इन द साउथ. द सदर्न मोस्ट इज कॉल्ड एज शिवालिक. सबसे छोटा है और सबसे सदर्न मोस्ट दैट इज कॉल्ड एज शिवालिक. इट इज द यंगेस्ट रेंज. नेक्स्ट टू द शिवालिक्स आर लेसर हिमालयस. अबाउ शिवालिक वी आर हैविंग लेसर हिमालयस, एंड सबसे ग्रेटेस्ट है ग्रेटर हिमालयस, और सबसे टॉलेस्ट है ग्रेटर हिमालयस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री. अबव दैट, अबव हिमालयस वी आर हैविंग ट्रांस हिमालयस. काराकोरम रेंजेस आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सो रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रेस्पेक्टिवली. सबसे यंग है शिवालिक एंड सबसे ओल्ड है ट्रांस हिमालयस और हिमाद्री. एंड द माउंटेन रेंजेस आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालयस. कश्मीर में जो हिमालयस है दैट आर कॉल्ड एज वेस्टर्न हिमालयस. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कश्मीर हिमालयस. In central region, in Uttarakhand, in Himachal Pradesh, we are having Himalayas that are called as Kumaon Himalayas. In the eastern part or in the Assam, we are calling the Himalayan ranges as Assam Himalayas. Next is northern plain, the land lying between Himalayas and Plateau region और Peninsula region. Himalayas north में है और Plateau region south में है. उसके बीच में जो land है that is called as plains. Plains are also divided between different parts. So गंगा river ने जो plain बनाया that is called as गंगा plain. गंगा रिवर जब भी फ्लो करता है वो अपने साथ सैंड, सेडिमेंट, रॉक डिपॉजिट करता है. जब भी डिपॉजिशन बार बार हर साल बढ़ जाता है तो वहां प्लेन बन जाते हैं. सो दैट इज गंगा प्लेन. ब्रह्मपुत्रा रिवर ने जो प्लेन बनाया दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्रा प्लेन. इन पंजाब वी आर हैविंग सतलज रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट आर मेड अ प्लेन दैट इज कॉल्ड एज पंजाब प्लेन. सो प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये अरावली रेंजेस आर एक्टिंग एज अ बाउंड्री. सो हियर वी आर हैविंग 1 पार्ट एंड हियर वी आर हैविंग 1 पार्ट. सो गंगा प्लेन्स आर लोकेटेड हियर and other plains are located here. So Aravalli ranges are acting as a boundary between that plains. So we are having northern plains are divided into 2 parts. The part lying to the east of Aravallis is and the basin of river Ganga and therefore known as Ganga plains. It slopes eastward. So ये गंगा plains है, ये east की तरफ slope करता है. Slope east की तरफ है. East की तरफ means it is near Bay of Bengal. So Delhi is at higher position. एंड बे ऑफ बंगाल इज एट लोअर पोजीशन. सो दिल्ली हायर पोजीशन है, बंगाल लोअर पोजीशन है, तो वैसा स्लोप है.
Most of the West Bengal state of India and Bangladesh together constitute delta region of Ganga Brahmaputra system. It is known as Sundarbans. There are trees called as Sundri trees. Sundri trees मिलते हैं, इसे उसे Sundarban बोलते हैं. It is considered to be world largest delta. So this is the photograph of delta. So this blackish region or black region is land and this white region is water or river. सो ये रिवर के डिपॉजिट करने के बाद यहाँ लैंड बन गया. सो दिस इज द डेल्टा. दिस इज सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. सुंदरबन डेल्टा इज इन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया. The western part of northern plains is occupied by desert. So in Rajasthan, the plains are called as Thar Desert or Marusthali. Most of the Rajasthan is occupied by desert. The desert lies to the northern to the desert lies the plains of Punjab. The region is spread to the west of Aravallis and Delhi ranges. These plains are formed as a result of depositional work by Satluj River. Satluj River के deposition की वजह से पंजाब plains बना है. And its tributaries. The slope of the plains is towards west. So हमने देखा कि गंगा प्लेन्स का स्लोप ईस्ट की तरफ है. सो गंगा से अगर दिल्ली से पानी स्टार्ट होगा तो ये बंगाल की तरफ फ्लो करेगा, ईस्ट की तरफ फ्लो करेगा. अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब से जो रिवर फ्लो करते हैं ये ईस्ट की तरफ नहीं आते, उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं आते. दैट आर गोइंग टुवर्ड्स पाकिस्तान. सो द स्लोप इज टुवर्ड्स पाकिस्तान और वेस्ट. द प्लेन हैज फॉर्म्ड द रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन बाय सतलज एंड इट स्लोप टुवर्ड द वेस्ट. बिकॉज ऑफ द सॉइल हियर इज फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज largely done here and it is the most populated area in our country. सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्लेन्स में होता है. गंगा प्लेन और सतलज प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन इस रीजन में होता है. एंड बिकॉज ऑफ द मोर एग्रीकल्चर इज डन, it is mostly populated area in our country. Next is Peninsula. The area lying to the south of North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean is called as Indian Peninsula. So if you see the Peninsula region, it is tapering towards the south. यहाँ ब्रॉड एरिया है और यहाँ टेपर कर रहा है, यहाँ पॉइंटेड पार्ट बन रहा है. इट इज टेपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, सो इट इज कॉल्ड एज पेनिनसुला. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेनिनसुला प्लेटू. So it consists of many plateaus and hill ranges. The Aravallis in the north are the oldest fold mountains here. So Aravallis are one of the oldest mountains that are found in the world. It includes series of plateaus bordering plains, Vindhya, Satpuras ranges and central part of hilly regions and western Ghats. So here we are having Vindhya ranges. So these are the Vindhya ranges. These are Satpura ranges. Here Eastern Ghats. So in Maharashtra we are also calling it as Sahyadri. Here we are having Eastern Ghats. वेस्टर्न घाट का जो सबसे टॉलेस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी. हियर इट इज महेंद्रगिरी. एंड सबसे टॉलेस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, इट इज कॉल्ड एज अनायमुडी. सो अनायमुडी इज हियर. नीलगिरी माउंटेन्स आर लोकेटेड हियर. इफ यू सी द घाट रीजन और इफ यू सी दिस घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स आर मोर टॉलर. वेस्टर्न घाट का हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट. और वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, गुजरात से केरला तक वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है. बट इफ यू सी दिस पार्ट, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. यहाँ एक माउंटेन है, यहाँ बीच में ब्रेक है, यहाँ वापस माउंटेन है, यहाँ बीच में ब्रेक है, यहाँ वापस माउंटेन है. सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस. ईस्टर्न घाट इज नॉट कंटिन्यूअस बट विथ इज मोर. यहाँ कोस्टल प्लेन्स का विथ ज्यादा है, यहाँ कोस्टल प्लेन्स का विथ कम है. देन विंध्या, सतपुड़ा एंड सेंटर पार्ट ऑफ हिली रीजन एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. सो दैट आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. So if you coastal plains now, India is blessed with long coastline extending for approximately 7,500 kilometers. 7,500 kilometers long coastline है इंडिया का. It extending from approximately 7,500 kilometers. It lies to the western and eastern part of peninsula. So we have seen western part में भी इंडिया के mountain sea है और eastern part में भी sea है. sea के पास जो land है that is called as coastal land और coastal region और coastal plains. In the western and eastern parts show remarkable dissimilarities. Western coastal plains अलग है, eastern coastal plains अलग है. Western coastal plains का width कम है, eastern coastal plains का width ज़्यादा है. This is delta. So when rivers are flowing, where rivers are long rivers, so rivers are bringing lots of sand and sediments along with this, lots of rock along with it. So ये deposit करने के बाद यहाँ छोटे छोटे islands बन जाते हैं. So यहाँ deltas बनता है. ईस्टर्न साइड के जो प्लेन्स है वो डेल्टास बनाते हैं और वेस्टर्न साइड के जो रिवर्स है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, अरेबियन सी की तरफ फ्लो करते हैं, वहाँ ईस्टुरीज बनाते हैं. सो वेस्टर्न घाट के जो रिवर्स है दैट आर मेकिंग ईस्टुरीज, क्योंकि रिवर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, रिवर बहुत फास्ट फ्लो करता है. फास्ट फ्लो करने के बाद यहाँ क्रीक बन जाता है, इट इज लाइक अ क्रीक, सो इट इज कॉल्ड एज ईस्टुरीज. और वेस्टर्न साइड के जो रिवर्स है दैट आर वेरी शॉर्ट रिवर्स, दैट आर वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स.
ईस्टर्न साइड के जो रिवर्स है दैट आर वेरी स्लो फ्लोइंग रिवर्स। ये जब भी रिवर्स सी के पास आते हैं तो ये लगून्स बनाते हैं। लगून्स मीन्स बीच में यहाँ एक सैंड का एक डैम जैसे बन जाता है। सो इट इज डिवाइडिंग दिस रीजन, सो इट इज लाइक अ lagoon or it is dividing this region. The western coastal coast borders the Arabian Sea and it is by and large rocky coast, so it is consisting of rock. At places spurs taking of the western Ghats have extended up right to the coast. So western Ghats के कुछ mountains है ये coast तक चले गए हैं, coast में end हो गए हैं. Then it is width is also less, so as we have seen in the map also, western coastal plains का width कम है, eastern coastal plains का width बहुत ज़्यादा है. Rivers originating from western Ghats are short and swift and hence they form estuaries and not deltas. As the rivers are very fast flowing rivers, so river fast flow करते हैं तो अपने साथ sand sediment ज़्यादा नहीं ले पाते, so they are forming estuaries. And western Ghats के जो rivers है that are forming estuaries, eastern Ghats के जो rivers है that are forming deltas. The eastern coastal coast borders the Bay of Bengal and it has formed the result of depositional works of river. There are many rivers like the Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi. That rivers have brought sand, sediment, rock along with it. So ये sand, sediment जैसे deposit करते जाते हैं वहाँ plain बनता है. So eastern coastal plains had formed because of depositional works of rivers. Many east flowing rivers using the western and eastern Ghats meet this coast. Because of the gentle slope of land, river flow at low velocities and deposit the sediments through them at the coast. So if you see the slope of the land, here the slope of the land is gentle. की बात करेंगे, एक स्लाइड की बात करेंगे. स्लाइड जब भी सीधा होगा तो वो स्लोप स्टीप होता है. वेस्टर्न साइड का जो वेस्टर्न घाट्स का जो स्लोप है ये स्टीप है, तो वहां के जो रिवर्स है बहुत फास्ट फ्लो करते हैं. लेकिन ईस्टर्न साइड का ईस्टर्न प्लेन्स का जो स्लोप है ये जेंटल स्लोप है. तो ये स्लाइड को अगर हम टेढ़ा करेंगे तो ये जेंटल स्लोप होगा. तो वहां अगर वाटर हम छोड़ेंगे तो वाटर बहुत स्लो फ्लो करेगा. वाटर जैसे स्लो फ्लो करेगा तो वो अपने साथ सैंड सेडिमेंट डिपॉजिट करते जाएगा. As it is depositing, then more and more sand and sediments are deposited and plains are formed. So western side का जो plain है that is steep slope. Western side का जो plains है that is having gentle slope. So the velocity of river is less. As the velocity of river is less, it is depositing more and more sand. As a result, deltas are found on the coast. So in the eastern coast, we are having deltas. Let us talk about island now. India has many small and large islands along the coast of mainland. These are included in the coastal island group. Beside India has two large groups of island. One each of the Arabian Sea and Bay of Bengal. So India के जो coastal region में जो islands है that are part of coastal plains, और जो main islands है that are in the sea. In Arabian Sea we are having Lakshadweep Islands. In Bay of Bengal we are having Andaman and Nicobar Island. Most of the islands in Lakshadweep are atoll islands. Atoll islands means एक रिंग जैसा होता है. रिंग इज मेड अप ऑफ सैंड और रॉक्स एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ कोरल रीफ्स, एंड इन बिटवीन दैट वी आर हैविंग वाटर एंड सराउंडिंग दैट आल्सो हैविंग वाटर. सो इट इज जस्ट लाइक ए रिंग. ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स है. सो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ अटॉल आइलैंड्स. ऑल्सो वी आर हैविंग अंडमान निकोबार आइलैंड दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अटॉल आइलैंड, दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अटॉल आइलैंड. बट मेजरली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर मेड बिकॉज ऑफ वॉल्केनोस. जब भी वॉल्केनो इरप्ट करता है तो अपने साथ रॉक या सैंड सब लेके आता है बाहर. जब भी वो कूल हो जाता है, कूल होने के बाद हार्ड फॉर्म बन जाता है, एंड हार्ड फॉर्म बनने के बाद वो आइलैंड्स बन जाते हैं. इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वी आर हैविंग अ आइलैंड कॉल्ड एज बैरन आइलैंड. बैरन आइलैंड इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया. आज भी वो वॉल्केनो है. सो बैरन आइलैंड इज ओनली हैविंग अ वॉल्केनो इन इंडिया. Islands in the Arabian group are mainly volcanic islands. They are large with hills in interior part of the includes the island called as Barren Island, which has the only active volcano in India. There are atolls in the Andaman group too. So in the Andaman Nicobar group also we are having atolls. So hope you have understood this part. In the second part we will talk about the physiographic divisions of Brazil. So if you have understood this video, please share the video with your friends. Also, please subscribe to the channel. Also, tell your friends to subscribe to the channel. And thank you for watching.